can feel the heat is rising and that beat is here. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me. Guys, good morning, welcome back to my channel. अभी वीकेंड हो, वीकडेज हो, सब तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस तो है नहीं, बट ठीक है यार। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जो भी करें अपने भले के लिए कर रहे हैं। और सच पूछिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर ज्ञान बांट रही हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ एंड साथ ही साथ डिप्रेस्ड भी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा घर पे रहना कंटिन्यूसली, मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स होने वाला है हम लोगों का। क्योंकि बेंगलोर में जब ये पूरे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ लास्ट वेडनेसडे से, हम लोगों के यहाँ पे हो रहा है, उसके भी 1.5 हफ्ते पहले से शुरू हो गया। मतलब हम ऑलमोस्ट 3 वीक्स होने वाला है, तो आप लोग सोच सकते हैं कैसा लग रहा है हम लोगों को। बट स्टिल मैं वही बोलती हूँ कि जो भी करें हम अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए, सबके भले के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, देखिए, क्योंकि ये जो टाइम है हम सब लोग डरे हुए हैं, स्ट्रेस भी चल रहा है, एंग्जाइटी है, लोनलीनेस है, तो एक अजीब सा फीलिंग, आई नो डिप्रेशन भी, ऐसा मुझे तो फील हो रहा है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने आप पे ही थोड़ा काम करना ज़रूरी है, सो दैट हम इतना डिप्रेस्ड ना हो। तो इसीलिए मैं इस सब काम में बिजी रह रही हूँ, बिजी रख रही हूँ अपने आप को। क्योंकि टीवी देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि टीवी देख के उतना ज़्यादा हम अपना लोनलीनेस या बोर्डम को दूर नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको बोलूँगी। तो बस वही है, आज मेरा बहुत सारा काम है। एक्चुअली ये भी एक रीज़न था कि मैं ये वीकेंड पे ना कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने सोचा नहीं, अभी आज मैं मंडे है, एक न्यू वीक का न्यू स्टार्ट है, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो वही आज बहुत सारा काम है। 2 दिन में एकदम कुछ भी काम नहीं किया था, सिर्फ कुकिंग के अलावा। तो अभी आप लोगों को पता ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा क्लीन करना भी ज़रूरी हो गया है। तो मैं आज, मुझे डस्टिंग करना है, देन उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। हाँ, मैं ऑनेस्टली एक बात बता दूँ, मैं एवरीडे झाड़ू पोछा नहीं मार रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे ना, तो एवरीडे झाड़ू पोछा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं ऑल्टरनेट डे करके झाड़ू मारती हूँ और हफ्ते में 2 बार या 3 बार पोछा मारती हूँ। तो आज वो डे है, तो मैं सोच रही हूँ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कुछ भी मतलब ये नहीं हुआ, डस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि मेड को मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने उसको मना कर दिया, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। तो मैं आज वो सारा काम करूँगी, कुकिंग भी करना है। तो मैं दिखा दूँ, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट जस्ट रेडी करके ही मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्या ब्रेकफास्ट है आज का हम लोग। ये रहा आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट, डोसा। जो मैंने डोसा बैटर घर पे बनाया था ना, बहुत ज़्यादा बना के रखा था, वही मतलब चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो यही डोसा और थोड़ा सा साथ में मैं सॉस वगैरह ले लिया है, तो वही यही हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट है। बाहर का वेदर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, बट ठीक है, इतना गर्मी नहीं लग रही है, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी है। और मेरा बालकनी का हालत देखिए, मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह रख दिया है, कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। एक्चुअली इतना पिजन आ रहा है ना सारे, मतलब ये जो पॉट दिख रहा है ना, ये सब पॉट के ऊपर वो लोग बैठते हैं, उसके बाद सारे मिट्टी चारों तरफ गिराते हैं, बहुत गंदा कर। ये बालकनी को ही अभी तक हम लोगों ने कोई नेट वगैरह नहीं लगवाया है, क्योंकि मन नहीं हुआ यार। ये बालकनी में भी नेट लगा था, ऐसा बंद सब कुछ लगता है, तो मैंने सोचा I don't know where you came from. I don't know what you did to my heart. You touched my soul like a phantom, and you did it right from the start. Like nobody is watching what we're doing, like nobody
with you, I don't need the contest. Like nobody is judging while we're dancing. We're dancing till we get lost. We're dancing till we get lost. We're dancing till we get lost. Follow you, the only thing I want to do. Through everything we step into, we're dancing till we get lost. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes, oh, here he goes, here he goes, here he goes. With his humble lacking everlasting ego. Someone hurt your feelings not that long ago, and every bit of you couldn't face the truth that maybe you're just not that nice and humble kind. That would be a lie. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. Oh, here he jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. So guys, आप लोगों ने देखा
मेरा जो आज का क्लीनिंग वगैरह का काम था, सब डस्टिंग किया, झाड़ू पोछा, झाड़ू तो नहीं, मैंने वैक्यूम क्लीन किया, पोछा मारा, ये सब कुछ काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए ओवर मेरा क्लीनिंग का काम। अभी क्या करिए, सब क्लीनिंग वगैरह करना पड़ रहा है, बट ऐसे जो मैंने क्लीन किया ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग है, मैं डेली नहीं कर रही हूँ। डस्टिंग तो मैं हफ्ते में 1-2 बार कर रही हूँ, और बाकी झाड़ू पोछा ये सब मैं ऑल्टरनेट डे करके कर रही हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा काम पेंडिंग था, वो सब किया, और अभी मुझे नहाना है सबसे पहले, उसके बाद ही आके मैं कुकिंग करूँगी।